focus of our reporting on infant and maternal health has been a rural preoccupation. We've brought you frightening reports from primary health centres and district hospitals on the terrifying conditions in which children are born. But perhaps it comes as an even greater shock to bring you reports on the abysmal healthcare from one of India's most sophisticated, elite and powerful states, its capital centre, Delhi. First, a sobering statistic. Delhi, unlike all other states of the country, has actually shown a rise in infant mortality in the past 10 years. The infant mortality figure average from 1995 to 97 is 31.3 deaths per thousand. From 2005 to 2007, that figure has gone up marginally to 36. The cold fact, Delhi will only meet its Millennium Development Goal to reduce infant mortality by 2/3 by 2066. That's actually much later than many other states like Andhra Pradesh, Rajasthan, even Bihar. Here's a glimpse into a world which will explain partly the reason for such alarming statistics. There are about 26 maternity homes run by the Municipal Corporation of Delhi, many of them ideally located in congested low-income areas, and most of them have a maternity health centre attached. Together, these are supposed to comprehensively cater to the needs of pregnant women and their infants, free of cost. But here's what we found when we randomly visited 12 centres. यहाँ इंचार्ज कौन है भाई? आज की अभी सफाई कर्मचारी आएगी तब करेंगे। क्लिनिक के टाइमिंग्स क्या हैं? 9 बजे से शुरू करते हैं। और कब तक? 12 बजे एंट्री करते हैं। ऑफिशियल टाइम तो 9 से 3। 9 से 3। This is the state of the clinic section where women can come for checkups and bring their infants for immunization. Upstairs, the maternity home, filthy, with 12 beds bewilderingly empty for an area where women are desperate to access free health care. Large empty shelves, dilapidated buildings and absolutely no services. यहाँ पे अभी इस वक्त आप इस पे ड्यूटी पे हैं? नहीं, आप कौन हैं यहाँ के? आप डॉक्टर हैं? रात को कौन से डॉक्टर हैं ड्यूटी पे आज? सिस्टर सरिता और सिस्टर प्रियंका होंगे आज। सिस्टर, लेकिन डॉक्टर कौन होंगे? मैम डॉक्टर नहीं होंगे क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। हाँ? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है मैम। Then more bewildering news. These maternity homes do not take women in their first pregnancies, but refer them to bigger state or central hospitals. क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, no facilities available, no oxygen cylinder, no suction machine available at present. तो इंस्ट्रूमेंट तो हम है ही नहीं, एक सीजर भी नहीं है, एक ड्यूटी भी सीजर है, उससे हम लोग। This is marginally cleaner, but again utterly empty. Most pregnant women are simply referred to larger state hospitals. जैसे एनीमिक पेशेंट है, 6.5 ग्राम उसका HB है, तो हम इसको यहाँ हैंडल नहीं कर सकते ना, इसलिए हम इसको रेफर करते हैं। एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है ना, डॉक्टर्स की भी फैसिलिटी नहीं है, स्टाफ की भी फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर्स की भी फैसिलिटी नहीं है, स्टाफ की भी फैसिलिटी नहीं है। Here we do find some women who've come to deliver their babies, but the doctor says nothing can be done about the filthy and unhygienic conditions. डॉक्टर नहीं आए। हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल भी पानी नहीं है और बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं, बार-बार सारी जगह भेज रहे हैं। मतलब यहाँ तक नौबत आ जाती है कि हम अपने घर से तो पानी पीने के लिए लाते हैं, पेशेंट के लिए लाना पड़ता है। कई बार तो पेशेंट को बोलना पड़ता है नियर बाय आप पानी की बाल्टी साथ ले आओ। In the elite South Delhi areas, the homes may look better, but again empty, a waste of space and resources. Actually, we don't have a pediatrician and the no specialist out here, na. Oh. And blood bank we don't take. That's Okay. If patient come in the fully right state, then we book a delivery. There is no sign of any activity here. The maternity ward meant to function 24 hours has been locked up by 4 p.m. कहाँ डॉक्टर? आपको ओपीडी के टाइम में आना चाहिए। 24 घंटे एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहता है, एम्प्लॉयड है, पे रोल्स में है कि नहीं? बिल्कुल है। सही बोल रही हो कि नहीं? आप ही मुझे बताइए। मतलब आप लोग सब आप क्यों परेशान क्यों कर रहे हो? आप परेशान नहीं कर रहे हैं, जानकारी लेने का हक है, ये आम जनता के लिए है ये सब चीजें, है ना? As we argue about the absence of the doctor, a couple arrive.
the woman in an advanced stage of labor. At first, the lady health visitors, as they're called, are reluctant to take her in. But on camera, referring her to another hospital may look bad. This is Sushma's third pregnancy. She's already lost one child at the age of 4 months to an infection, she says. This time, she's lucky she's not referred away, as she would have delivered en route. NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.